So we have started with the parental products, and there was one slide which was last time, which was missed. So parental products we have started. We have seen a lot of things from parental products. We have seen these things. Yeah, this slide was remaining. So as you can see, different quality control test containers used in the parentals. Quality control test for containers used in the parentals. So mostly glass containers they are used in the parentals, as I have told you in the previous session. So different type of test, different type of for evaluating the glass container. Chemical resistance. So quality control test for evaluation of the chemical resistance of the glass. Okay. What is chemical resistance of the glass? When you are sterilizing something, when you are sterilizing your preparation in the container, so there are chances to leak a alkali from the glass surface, because glass क्या होता है कि glass is made up from a silica and a sodium silicate and other salts. So a lot of alkalis are present. Alkalis are present in the structure of glass, right? So under the stress condition, under the extreme condition, under the condition of autoclave, that is 121 degrees Celsius for 15 minutes or other conditions. Right? So at an extreme condition, there are chances to leak the alkali by the glass. Right? Now that alkali should be in the limit. So quality control test for glass container for evaluation of chemical resistance of a glass. Total amount of alkali released by glass by the in the purified or distilled water under the controlled evaluation temperature. That test are there. So there are two tests. Water attack test is there, and powder glass test. Powder glass test is there. Now, water attack test ये किसके लिए है? It is performed on the whole container. Water attack test वो पूरा container लेना है, उसको break नहीं करना है. So it is performed on the whole container, and it is used with the container that have been already exposed to sulfur dioxide fumes under the controlled humidity condition. So water attack test किसके ऊपर करना है और powder glass test किसके ऊपर करना है, यहीं पे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा. So type second glass, that is known as a treated soda lime glass. Type second glass, for that water attack test is there. Water attack test is applicable for type second glass. We have seen in the yesterday's session. टाइप सेकंड जो क्लास होता है ट्रीटेड सोडा लाइम, उसके लिए वाटर अटैक टेस्ट होता है. क्यों? बिकॉज दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द होल कंटेनर एंड यूज्ड, it is the test used for those containers which are already exposed to sulfur dioxide. Sulfur dioxide मतलब surface alkali has been neutralized with the sulfur dioxide. So that's why type second glass is known as a treated soda lime glass. Now whether the amount of alkali is leached or released or not in the water after subjecting the container to a high pressure condition. तो आपको ये कंटेनर में स्टराइल वाटर है ना, वो फिलअप करना है, फिल करना है, और आपको उसको यू हैव टू सब्जेक्ट दैट कंटेनर विद द वाटर फॉर द ऑटोक्लेव. ओके, कंटेनर्स, व्हाट इज द प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर्स यू हैव टू fill up with the water. Containers you have to fill up with the water. Fill with the water 90% of capacity. Container की जितनी कैपेसिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल if container is of 100 ml, so its capacity is 100 ml. 90% आपको है ना, 90% आपको fill up करना है 90 ml. Then the containers are subjected to autoclaving at a 121 degrees Celsius, 15 psi pressure for 30 minutes. This is the condition, and then you have to decant the liquid. You have to decant. Decant means you have to filter the liquid or liquid. Take 100 ml solution and then titrate against the 0.02 normal H2. 0.02 normal H2. 0.02 normal H2 में के साथ में उसको टाइट्रेशन करना है. फिर क्या है? तो when you fill up the water in the type second glass container and if you subject to it autoclave, that is 121 degrees Celsius for 30 minutes at a 15 psi pressure. So there is a leakage of alkali from the glass surface to the water. Now that amount of alkali leached, you have to test, you have to analyze. How you can analyze? As you have alkali in the water, so you have to titrate it with against the acid. What is the acid? That is
0.02 normal sulfuric acid, okay, by using indicator. Okay. Now you will come to know what is the amount of alkali present in the right type segment. So second test is there known as a powdered glass test, and this test is applicable for all type of glass. आपने देखा है last time yesterday we have seen ना water attack test. Water attack test is applicable for type second glass. Powder glass test is applicable for type 1, type 3, type 4. Okay, rest of all types of glasses. So it is performed on the ground sized glass particle. Means you have to break down the container. You have to reduce the container का size. जो container है उसको crush करना है, आपको उसको ground करना है. You have to grind the container, you have to crush the container, and you have to perform that test on a crushed container, right? Now whether the amount of alkali is released or leached or not in the water after subjecting a these crushed container or particles of glasses to a sterile water to a autoclave. Okay? So again 10 gram of powder glass जो कंटेनर क्रश करके पाउडर किया है आपने ग्लास का 10 ग्राम लेना है आपको 50 ml you have to add purified water in a conical glass then subject that to autoclave at 121 degrees 15 psig for 30 minutes. Cool the container under running tap water. 30 मिनट के बाद में आपको उसको निकालना है, कूल करना है. Then add 15 ml of purified water to it and then titrate against the 0.02 normal is2. Now उसका लिमिट क्या है वो ये ऑलरेडी सीन है. This slide was given so that's all. Now amber color glass is made by adding the iron oxide to the glass. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So amber color glass, some glasses they look like a brown color or amber color. What is the reason? Because in that glass while manufacturing the glass iron oxides are added. Iron oxide. What is the reason to make an amber color glass? The reason is very simple. The reason is nothing but to prevent your product from light. So they are the light resistant container. Amber color glass जो होता है light resistant container होता है. They are light resistant. Suppose your drug is prone to oxidation of light. अगर photo oxidation prone है आपका drug, so you have to keep that drug. You have to store that drug in a amber color glass container. Why? To prevent the oxidation. To prevent the oxidation of that. Now again, size of container for testing. Single dose container अगर है 1 ml to 100 ml. Size of container. Single dose container है 1 ml to 100 ml. या फिर multiple dose container it may be up to 30 ml. Size of container. तो single dose में एम्पुल में 0.5 ml का एम्पुल आता है, 1 ml का एम्पुल आता है ना? या फिर सिंगल डोज में आपका 1 लीटर तक हो सकता है इन केस ऑफ लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स. बट मल्टीपल डोज में क्या है कि वाइल आपका 10 ml का, 5 ml का, 20 ml का, 30 ml का. So that is the, and after that we have seen this highly resistant borosilicate glass. The limit for 0.02 normal is to super is not more than 1 ml. Okay? And for type 2 glass not more than 0.7 ml. For type 3 glass not more than 8.5 ml. For type 4 glass not more than 15 ml. So we have seen this. Okay? Now we have also seen rubber. We have also seen these things. Okay? Lal test and sham test we have seen yesterday. So types of parenteral formulation also we have seen. Remember most commonly used diluent or bulking agent. Bulking agent in the freeze dried product. That is nothing but the diabasic sodium and monobasic sodium phosphate. तो ये याद रखना है आपको. Diabasic sodium phosphate. We have seen that. Also seen. Now facilities requirement for parenteral preparation. तो parenterally preparation के लिए जो area होता है industry में. So the area for parenteral preparation. Now these are of two type. These are of two type. Now you can prepare sterile formulation by either preparation and then sterilization. That is known as terminal sterilization. Or you can prepare or you can prevent the contamination right from the beginning. So इसमें है ना injection preparation or to achieve the sterility there are two ways. So first you prepare your preparation and then subject to sterilization. पहला वे है आप sterility कैसे maintain कर सकते हो, कैसे
how you can achieve the sterility? There are two ways. First way is that you have to prepare the your formulation, then subject that formulation for the sterilization, known as the terminal sterilization, right? Terminal sterilization. Other you can prevent the contamination right from the beginning, known as the aseptic technique. So primary objective क्या होता है आपका injectables का? So primary objective is nothing but to prevent the contamination. So that's why you have to design your as per the norms. Okay. So rigid surfaces there should not be rigid surface. जो आपका इंडस्ट्री है उसमें कोई rigid surface नहीं होना चाहिए. जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जहाँ पे आप फिलिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप सीलिंग कर रहे हो, aseptic प्रोसेसिंग कर रहे हो. So surface should not be rigid. Rigid surfaces and corners should be finished with the epoxy coating. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So epoxy coating should be there. Epoxy coating. So in the parenterals, your rigid surfaces and corners of the room, preparation room, that should be coated with the epoxy coating. So उसका एक spray on tile type का spray आता है. By spraying or by painting with the continuous smooth seal coating or sealing and walls. जो सीलिंग एंड वॉल्स होते हैं, आपने देखो आपके घर में अगर सीलिंग के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे कॉर्नर नजर आएगा आपको, वहाँ पे कॉर्नर नजर आएगा. लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे कॉर्नर नहीं होंगे, बिकॉज so in that corner airborne bacteria, in that corner some pesticide, some flies, mosquitoes, they used to go in that corner, they used to stick over there. So that's why in the industry there is no corners. इंडस्ट्री में कॉर्नर्स नहीं होते, वहाँ पे सब क्या होता है, वहाँ पे सब इपॉक्सी कोटिंग होता है एंड दैट इज राउंडेड ऑफ. इंडस्ट्री में जाके आप देखो वहाँ पे ऐसे कोई कॉर्नर नहीं होते ना सीलिंग में. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर formulation is nothing but to prevent the contamination, and rigid surfaces and corners they should be finished with the epoxy coating, spray on tile, then by spraying or by painting to form a continuous smooth seal on a ceiling and walls. Now it can wear and tear after continuous clogging. Okay, after continuous clogging with the detergent. तो आपको एक फॉर्मुलेशन होने के बाद में सब साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है उसको. सो इट कैन वियर एंड टियर, जो इपॉक्सी कोटिंग है इट कैन वियर एंड टियर विद द कंटिन्यूअस clogging with the now one of the best material for floor designing is nothing but the ceramic plastic cement. कभी कभी क्वेश्चन आता है कि for the parenteral production for the aseptic area the cement used in the floor, so that is the ceramic plastic cement applied it as a thick coat over the existing rigid flooring. और environmental control, तो एयर जो है एयर कैसे जाएगा, environmental control of environment again is important because source of contamination is nothing but the water or air or contaminated hands, etc. So standards are of different for cleanup area, packing area, compounding area and filling area. तो जो पेरेंटल में प्रिपरेशन में different एरिया होते हैं, they are designated, they are named. क्लीनअप एरिया मतलब वहाँ पे उतना स्ट्रिंजेंट एसेप्टिक कंट्रोल नहीं होगा क्लीनअप एरिया में. पैकिंग एरिया में भी उतना नहीं होगा. कंपाउंडिंग एरिया में डेफिनेटली स्ट्रिंजेंट होना चाहिए. फिलिंग एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए. सो you can expect a little bit contamination in the cleanup area, the packing area, but in the compounding and filling area there should be totally aseptic, there should be totally free from viral count of organism, right? So unquestionably the entire area used for the parenteral product should be aseptic. उसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कंटेमिनेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. अनक्वेश्चनेबली the area should be aseptic. Product which are terminally sterilized, तो बाद में lastly उसका sterilization होता है. So the product which involves terminal sterilization they have somewhat less rigid biological control, relaxation होता है. टैरिफ कंट्रोल कोई भी कहाँ पे घुस नहीं सकता. टैरिफ कंट्रोल, एक्सेस बाय पर्सनल कोई aseptic corridor, जो aseptic एरिया है aseptic corridor है, so that control that access to a personnel to aseptic corridor and aseptic compounding and filling room is only by through airlock system.
तो कंपनी में क्या होता है, एयर लॉक सिस्टम होता है। मतलब क्या, वहाँ पे कुछ इस तरीके से डोर होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ नहीं खोलेंगे। दोज डोर्स विच ओपन्स एट द आउटसाइड नॉट इन इनसाइड, मतलब अंदर का बाहर भेज देगी हवा, ऐसी ही उसमें ये होती है कि बाहर के अगर अंदर आएंगे तो कंटेमिनेशन हो जाएगा। दैट्स व्हाई एक्सेस टू ए पर्सनल मतलब जो बंदे रहते काम करने वाले, so to the aseptic corridor and aseptic compounding and filling room, that should be only airlock system. And then pass through opening and double ended sterilizer are provided to permit the control passage of the supply. पास थ्रू बॉक्स होता है आपको स्टरलाइज करने वाला, इतना वैसा नहीं कि आप जाके कंटेमिनेशन लेके गए पेरेंटल में। And so while moving from non-aseptic area to the aseptic area, so you have to wear a lot of things. You have to wear aseptic gown. You have to take a air shower, etc. etc. Okay? They have to remove their street clothing. So whatever officer is working in the rental area, so he has to remove their street clothing. Okay? They have to wash their hands, then they have to wear donning gowns. So whatever gowns which are permitted in that area, sterile gowns, so you have to wear that, shoes, face mask, gloves and other prescribed attire. attire मतलब जो भी बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है, attire मतलब जो भी गाउनिंग करना है, जो भी आपको जितने भी आपको मतलब यू हैव टू ईयर है ना, ग्लास, यू हैव टू वेयर gloves, etc., etc., shoe cover, etc. That is attire. Unauthorized personnel should not be permitted into a aseptic area. So preparation and filling, it is done in the aseptic area. For the parental में aseptic area मतलब क्या, aseptic area means there is totally absence of any viable form of organism in this area. Absence of any viable form of organism in this area, aseptic area. Now housekeeping है ना, ये ये जो पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, दीज पॉइंट्स दे आर डिटेल्ड डिस्क्राइब्ड इन द बुक्स में पढ़ने जाओगे तो उसको बहुत डिटेल में है, बट उसमें का एसेंस जो है, उसमें का इम्पोर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके मैंने यहाँ पे आपको सामने रखा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इतना इतना शॉर्ट में थोड़ी होता है, इतना शॉर्ट में होता ही नहीं। यू कैन रीड, गो एंड रीड इन द बुक इन द डिटेल, बट एक आपको एकदम सुपरफिशियली भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा डीप में लेंगे तो फिर आप लोग को 4 साल लग जाएंगे। दैट्स वाई सो इतना भी सुपरफिशियल नहीं है ये, जो बोर्ड में रहता है कंटेंट वो तो इम्पोर्टेंट रहता है। then housekeeping, all cleaning equipment should be selected for its effectiveness and freedom from lint production tendency। अभी जो हाउसकीपिंग में आप जो है ना, हाउसकीपिंग में आप जो क्लॉथ यूज करने वाले, क्लॉथ फॉर द है ना, फॉर द वाइपिंग, for the cleaning extra, so that cloth should be lint free। lint free, lint मतलब क्या, धागे होता है, धागे है ना। अगर क्लॉथ लेंगे तो उसके देखो धागे निकलते, फाइबर्स निकलते। सो अगर इंडस्ट्री में कोई है ना, इंडस्ट्री में कोई डस्टर है, डस्टर मतलब वही कपड़ा, तो वो क्या है, लिंट फ्री होना चाहिए, लिंट, इसमें से धागे नहीं निकलते। एंड सरफेस डिसइंफेक्शन, surface disinfection is done by using isopropyl alcohol, spraying or wiping with a disinfectant, mostly used is isopropyl alcohol or IPA, or also by UV lamps. UV lamps can also be provided as alternative for the surface disinfectant. So these are the things related to the industry. Industry में कुछ इस तरीके से होता है, facilities for parenteral preparation. I hope you are getting my voice properly. Am I audible? Okay. Again, very important. This part is very important. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये करना है। Now, air control in the sterile room. Introduction of fresh air and removal of your recycle air. आपके केबिन में, आपके केबिन में नहीं, आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे, वर्क स्टेशन है वहाँ पे fresh air should be introduced, and whatever air is there from your room, that should be recycled. Such facility should be available over there. Okay? Now, air handling units are present in the industry. Air handling units are present in the industry premises. Now, okay, there are high efficiency particulate air filters for the to achieve the desired aseptic nature of air. High efficacy
high efficiency particulate air HEPA filters. So high efficiency particulate air, high efficiency particulate air, that is a high efficiency particulate air filters means HEPA filters, high efficiency particulate air. Now they are defined as a high efficiency, efficiency मतलब बहुत ज़्यादा efficiency किसमें, particulate air. So they removes 99.97%. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन है. So efficiency of HEPA filters, efficiency of HEPA filters, they are very efficient. They removes 99.97%, 99.97%. They removes particles of 0.3 micron size or larger. So they are very efficient in removing the 0.3 micron particle or larger. So they have 99.97% efficiency in the removing of particles of 0.3 micron or more. Now they are composed of a glass fibers. HEPA filters जो है वो कैसे बनाए हैं, ग्लास फाइबर से. They are composed of glass fibers. HEPA filters are composed of HEPA filters they are composed of asbestos. not glass. As HEPA filters are composed of asbestos. यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे थोड़ा ये अलग है, लाइनें अलग है. So efficiency of HEPA filters to remove the 0.3 micron particle or larger particle which is made from, ये जो particle है that is made from either glass fiber or fillers or electrostatic precipitants. जो बड़े बड़े particle है वो इससे बनते हैं. Now these HEPA filters they are efficient to remove 99.97% particle of 0.3 micron or larger micron. Air passing through these units should be virtually free from any foreign matter and organisms. Now integrity of HEPA filters, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Integrity of HEPA filters or efficiency of HEPA filters that can be checked by, it can be checked by DOP test, that is a dioctyl phthalate test. Efficiency of HEPA filters can be checked by dioctyl phthalate test. Dioctyl phthalate क्या होता है, it is a liquid, okay, it is a liquid, okay. इसकी फ्यूम्स जो है ना, फ्यूम्स पास किए जाते हैं. सो एक साइड में है ना जहाँ पे आपका HEPA filter लगा है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 कंपार्टमेंट है ना, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, ये साइड से एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे दूसरा कंपार्टमेंट है, यहाँ बीच में क्या है HEPA filter. तो इस साइड पे क्या है, इस साइड में to check the efficiency of HEPA filter whether they are efficient in removing the particular size particle or not. So you have to assess. For that DOP test is there. Dioctyl phthalate. So this liquid is, है ना, this liquid fumes are passed through the HEPA filters. ये liquid जो है ना dioctyl phthalate, उसके fumes जो है ना यहाँ से पास किए जाते हैं and efficiency is checked. जो पास हुए उसके बड़े बड़े. So efficiency of HEPA filter they are checked by dioctyl phthalate. Question आ चुका है. Now acceptance criteria क्या है? How, what is the acceptance criteria for DOP test? So first, 99.97% efficiency, not more than 0.03% of particles of 0.3 micron. Your HEPA filters will pass the test when, आपका HEPA filter का काम क्या होता है? HEPA filter मतलब क्या है? High efficiency particulate air filters. मतलब उनके efficiency बहुत ज़्यादा होता है to remove the particles from air. कौन से पार्टिकल भाई? 0.3 माइक्रोन के और लार्जर साइज के, राइट. वो आपको दिया है फिल्टर, आपको क्या मालूम इफिशिएंट है या नहीं. So to check the efficiency of HEPA filters, so that is a test. There is one test known as a dioctyl phthalate test, DOP test, dioctyl phthalate test. Now what you have to do, you have to create a fumes of dioctyl phthalate at one side of your HEPA filter. You have to check amount of dioctyl phthalate which is being passed through filter at another side. Now for that acceptance criteria क्या होना चाहिए? 90, it should remove 99.97%. It should be 99.97% efficiency. The HEPA filters can be called as a 99.97% efficient when it removes the particle size and not more than 0.03% of particle of 0.3 micron is present at the another side. Second, HEPA filters can be called as a 99.99% efficient when not more than 0.01% of particle of 0.3 micron is present at the other side. मतलब एक साइड पे आपको इसका फ्यूज करना है, इसका है ना, इसका फ्यूज पास करना है HEPA फिल्टर से. अगर HEPA फिल्टर ने
99% 99.97% इफिशिएंट है। कब बोल सकते हो आप, है ना, जब नॉट मोर देन 0.03% पार्टिकल, मतलब 0.03% पार्टिकल उससे पास हो चुके हैं, नॉट मोर देन, तब उसको बोल सकते हैं 99.97% इफिशिएंट है। You can say HEPA filter is efficient 99.99% when it passes not more than 0.01% of particles of 0.3 micron. So efficiency important है आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुके हैं, तो याद रखना है HEPA filters का efficiency 99.97 है। कब? when not more than 0.03% of particle of 0.3 micron passes, इससे ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 0.03% ऑफ पार्टिकल साइज having 0.3 micron, then only it is called as a 99.97% efficient. Now it is called as a 99.99% efficient when not more than 0.01% of 0.3 micron particles they are passed. See 0.01% पार्टिकल ही पास हो रहा है 0.3 micron पे, तो उसको बोलेंगे 99.99% efficient. Now relatively okay, new air control system based upon the नया control air system control आ चुके हैं based upon the laminar flow, based upon the new air control based upon the laminar flow unit. So they are now principally currently in a is the only means to achieve the class 100 clean room. So जो aseptic rooms होते हैं उसको divide किया जाता है class 100, class 1000, class 10,000 like this. So class 100 means it is known as a clean room. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन है. So relatively new air control system based upon the laminar flow, based upon the laminar flow principally currently is the only means. आप class 100 area अचीव करने के लिए आपको laminar air filters यूज करना है. So to achieve the class 100 area known as a clean room, and this class 100 area or clean room is used for the preparation and filling of sterile preparation. So filling and compounding and filling of sterile preparation is done in the class 100 area. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Now what is class 100 area? So class 100 area or clean room is defined as is known as a room in which the particle count of air is not more than 100 particles per cubic feet. है ना, क्लीन रूम किसको बोलेंगे, 100 क्लीन 100 रूम किसको बोलेंगे, नॉट मोर देन 100 पार्टिकल्स पर क्यूबिक फीट ऑफ 0.5 माइक्रोन. और 0.5 माइक्रोन के पार्टिकल पर क्यूबिक फीट 100 पार्टिकल से ज्यादा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्लीन रूम. तो क्लीन रूम इज डिफाइंड एज अ class 100 room or clean room is defined as a room in which the air count is not more than 100 particles per cubic feet of 0.5 micron or larger. उसको बोलेंगे clean room, and it is known as a room for aseptic area filling operation. क्वेश्चन आ चुका है. Now air flow in this room should be unidirectional, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, and uniform. The flow should be unidirectional and uniform velocity. The velocity used is nothing but the 100 plus minus 20 feet per minute. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. What is the velocity of air in the clean room? So velocity of air in the clean room should be 100 plus minus 20 feet per minute. ना, plus 100 का मीनिंग क्या होता है, not more than 100 particles per cubic feet of 0.5 micron or larger size. Now class है ना, क्लास 100 एरिया होता है, उसके बाद में क्लास 1000 एरिया होता है, उसके बाद में क्लास 10,000 एरिया होता है. सो क्लास 1000 एरिया कैसे डिफाइन करेंगे, क्लास 1000 एरिया मीन्स इट इज द रूम कंटेनिंग पार्टिकल काउंट नॉट मोर देन 1000 पार्टिकल पर क्यूबिक फीट और 0.5 माइक्रोन और लार्ज. 100 पार्टिकल से कम है, यहाँ पे 100 पार्टिकल है तो क्लास 100 है. 100 से ज़्यादा है 1000 है, 1000 तक है 1000 है, 1000 से ज़्यादा नहीं है तो क्लास 1000 है. 1000 है उससे ज़्यादा है, 10,000 से कम है तो क्लास 10,000 है, like this. Okay, so class 10,000 room is defined as a particle count not more than 10,000 particles of 0.5 micron size or larger per cubic feet. And a class 100 area is used for the aseptic filling and compounding operations. Class 1000 area is for pre-aseptic filling. Then class 10,000 area is for buffer area. It is known as a buffer area around the aseptic room, like packaging filtering.
प्रोसेस एंड एसेप्टिक गवर्निंग पर्सनल। तो क्लास 1000 रूम में ये कार्यक्रम किया जाता है। कौन सा कार्यक्रम है ना? यूज यूज बफर एरिया है ना, एसेप्टिक एरिया के रिलेटेड जो काम करने हैं आपको, जैसे है ना, जैसे पैकेजिंग, फिलिंग है ना, पैकेजिंग, फिल्ट्रेशन, प्री फिल्ट्रेशन या फिर गाउनिंग और पर्सनल, ये क्लास 10,000 एरिया में करते हैं है ना। फिलिंग एंड सीलिंग किस में करते हैं? क्लास 100 एरिया। पर्सनल, पर्सनल मतलब काम करने वाले आदमी। दे शुड हैव गुड हेल्थ एंड शुड बी सब्जेक्टेड टू ए पीरियडिक हेल्थ चेकअप है ना। एसेप्टिक टेक्निक, आप एसेप्टिक प्रिपरेशन बना रहे हो, आप इंजेक्शन बना रहे हो, यू आर डीलिंग विद द पेरेंटल प्रोडक्ट्स, एंड वहाँ पे जो ऑफिसर है उसको ये सर्दी खांसी बुखार है तो वो कंटेमिनेट कर देगा। सो दे शुड हैव अ गुड हेल्थ एंड शुड बी सब्जेक्टेड टू ए periodic checkup. They should cover a whole body. They should cover a whole body with a specified cloth. They should take air shower before the entering into aseptic area. जब आप aseptic area के अंदर जा रहे हो तो आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, वो रूम बनाना है। वहाँ पे पूरा आपको एयर शावर, मतलब आप जो पानी लेते हो शावर, तो पानी की जगह वहाँ पे एयर शावर, देयर इज क्लीन एयर, तो आपके बाल वगैरह जो झटके वो सब निकल जाएंगे उससे। अब यूर जैसे डस्ट वगैरह पार्टिकल सब निकल जाए। डार्कॉन क्लॉथ इज मेड ऑफ अ कंटिन्यूअस फाइबर। डार्कॉन क्लॉथ जो होता है उसमें लिंट नहीं होता है, इट इज मेड फ्रॉम कंटिन्यूअस फाइबर व्हिच मेक इट लिंट फ्री एंड शुड बी यूज्ड फॉर द गाउनिंग गाउन्स। तो जो गाउन्स बनते हैं एस्थेटिक एरिया के लिए वो डार्कॉन क्लॉथ से, डार्कॉन क्लॉथ, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। डार्कॉन क्लॉथ, लिंट फ्री क्लॉथ, ठीक है। नाउ यू कैन सी over here various type of HEPA filters and their efficacy, right? Various type of HEPA filters and their efficiency and use. So कितने टाइप होते हैं? So HEPA filters type A is for industrial operations and non-critical operation. So they can remove 99.97%. They are efficient with the remaining 0.3 micron particle. 99.97% efficiency होता है इसके इंडस्ट्रियल एंड नॉन क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए जो HEPA filters लगते हैं उसके। Now HEPA filters for nuclear contaminant known as a B type B HEPA filters, they are for nuclear contaminant. जब न्यूक्लियर वार होता है तो वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशंस आते हैं, वो भी फिल्टर कर सकता है। So it can, the efficiency of that HEPA filter should be 99.97% of removing particle size 0.3 certified by DEO। एक टाइप सी लैमिनार एयर फ्लो में जो HEPA filters लगते हैं, so HEPA filters for laminar airflow should be 99.99% efficient of removing the particles size of 0.3. Type D जो होता है, they are known as ultra low penetration air ULPA, ultra low penetration power, penetration air. So 99.995, they are so efficient to remove the particles of 0.3 micron. 99.995. Then टाइप ई HEPA filters, इतने HEPA filters आपने देखे नहीं होंगे कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्टॉपिंग द टॉक्सिक न्यूक्लियर केमिकल एंड बायोलॉजिकल थ्रेट, ये वर्क करने उसके बाद। सो दे आर एफिशिएंट इन रिमूविंग 99.999% पार्टिकल्स ऑफ 0.3। एम आई ऑडिबल टू यू? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पढ़ाई करने के लिए और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ HEPA filters, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। Now areas, classes of areas and their respective operations carried out in the parental formulation. तो class A area क्या होता है? Grade A area. A grade area is also known as a class 100 area. A grade area is known as a class 100 area, and it is area for aseptic preparation and filling. तो क्वेश्चन आता है, in case of parental formulation, aseptic preparation and filling is done in the following area. ऑप्शन ए आएगा क्लास 100 एरिया, बी आएगा ये है ना। सो क्लास 100 एरिया इज फॉर एसेप्टिक फिलिंग एंड अगेन प्रिपरेशन। क्लास 1000 एरिया, क्लास 1000 एरिया मतलब क्या है? इट इज नोन एज ग्रेड बी। क्लास 1000 मतलब ग्रेड बी। सो क्लास 100 मतलब क्या है? नॉट मोर देन 100 पार्टिकल्स ऑफ 0.3 माइक्रोन और लार्ज साइज। क्लास 1000 एरिया मतलब क्या है? नॉट मोर देन 1000 पार्टिकल पर क्यूबिक फीट of 0.3 micron or larger. So it is known as a primarily or preliminary operation or class 100. तो class 100 में जो आपको एसेप्टिक फिलिंग करना है उसके पहले जो ऑपरेशन है
इसके लिए वो क्लास 1000 एरिया यूज करते हैं. Class 10,000 area also known as a grade C. So in this, not more than 10,000 particles per cubic feet of 0.3 micron or large. So this is the area for preparation of solution to be filtered. Now class grade D or class 1 lakh area. इसको क्या बोलेंगे? Class 1 lakh area. So handling of component after washing. So not more than 1 lakh particles per cubic feet in the year of 0.3 or more. These are the different areas. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपको. Next part is nothing but the isotonicity calculation. Methods for isotonicity. So you know that parenteral product should be isotonic with the blood plasma, and you know 0.9% sodium chloride. 0.9% sodium chloride by 0.9% weight by volume. Sodium chloride is a isotonic or isoosmotic with the blood plasma. आपके प्रिपरेशन का और ब्लड का प्लाज्मा का ना ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो देयर इज नो हिमोलाइसिस. अगर आपके प्रिपरेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पे ब्रस्टिंग हुआ, कम है तो वहाँ पे स्नीकेज होगा. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप योर प्रिपरेशन आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा. फॉर दैट you have to use various tonicity modifiers, right? So there are 2-3 methods that you can render your preparation isotonic. So what are the methods? First method is the freezing point depression method. Freezing point depression method. You can calculate the amount of sodium chloride required to make your drug isotonic with your blood plasma. तो पहला मेथड है freezing point depression method. So freezing point of blood plasma and TRC is nothing but the minus 0.52 degrees. तो freezing point कितना होता है? minus 0.52 है ना. ये freezing point होता है blood and tears का. Now solution, those solution which will freeze at a minus 0.2 degree. अगर जो टेम्परेचर पे minus 0.52 डिग्री पे जो solution freeze होता है will have a same osmotic pressure as that of the जो solution और जो solution minus 0.52 डिग्रीज पे freeze होता है और बर्फ बनता है. So it can have a same osmotic pressure as that of the body fluid. That's why there is one formula. W is equal to 0.52 minus A divided by B. GPAT 2023 में ये क्वेश्चन है. W is equal to minus 0.52. Okay, W is equal to minus 0.52 minus A divided by B. तो A क्या है, B क्या है? What is W? W is nothing but the weight of existing substances gram per 100 ml weight per volume in the final solution. A क्या है? Freezing point depression of adjusted hypoosmotic solution. B क्या है? Freezing point depression of 1% solution of sodium chloride. How to calculate the amount of sodium chloride required to render your preparation isotonic? That is calculated by using freezing point depression method. And what is the freezing point of sodium freezing point of your blood plasma and tears? That is a minus 0.52 degrees Celsius. Now those solution which will freeze at this temperature will have same osmotic pressure with that of body fluid and will not have hemolysis. That's why formula याद रखना इसके ऊपर GPAT 2023 में क्वेश्चन आ चुका है. W is equal to minus 0.52 minus A divided by B. A क्या है? Freezing point depression of adjusted substance. B क्या है? Freezing point depression of 1% sodium chloride solution. Sodium N तो आपको freezing point depression दिया जाता है. पहले तो गेट जब होता था फार्मेसी गेट उस टाइम पे इसके ऊपर कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता था. उस टाइम पे आपको डाटा दिया जाता था freezing point depression of cocaine hydrochloride. फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. और sodium chloride equivalent method. Also another method is there, sodium chloride equivalent method. So you can also render your preparation isotonic with the blood plasma, okay, by using this method, sodium chloride equivalent method. There are 2-3 methods more also, but here these two methods are most famous. तो इसके लिए फॉर्मूला है मोल इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू आई फैक्टर ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस. फॉर्मूला है उसका आयनिक फैक्टर. Compounding of parenteral product must be in a aseptic area. Filtration is carried out through a bacteria-proof filter like membrane filters.
is done under gravitational filling or vacuum filling. Sealing of ampoules. Ampoules जो होते हैं, sealing of ampoules may be done by the melting the portion of glass at the neck and then from either bed seal or full seal. तो laboratory scale के ऊपर आपके लैब में आपको ampoules seal करना है. Full seal method is used. आपने किया होगा नहीं किया होगा I don't know. But when we was studying in the B.Pharm, we have done this. So we used to have practical. पूरा उसको aseptic टेक्निक से पूरा उसको मतलब सलाइन सॉल्यूशन बनाना है 0.9% सोडियम क्लोराइड उसमें आपको 1 लीटर की बोतल में आपको उसको डालना है उसको क्लैरिटी टेस्ट करना है फिर एम्पुल फिल करना है तो ऑटोक्लेव करके वो सैंपल एम्पुल्स में फिल करना है aseptic टेक्निक में दो बर्नर के बीच में मतलब सेटअप वैसे उस तरीके और उसके बाद में you have to melt the tip of that ampoule on a burner ओके गैस बर्नर और बाद में एक आपके पास में जो ये रहता है ना जो आपका ये रहता है क्लैप रहता है चिमटा रहता है ना आपका के कंपास में उससे आपको ये टिप जो है ना वो गरम करते समय उसको पुल करना है और वो सील हो जाता है उसको बोलते हैं पुल सील मेथड बट पुल सील मेथड में क्या है कि वहाँ पे बहुत ही नुकीला वहाँ पे एक रेसिड्यू रहता है वो किसी के शरीर में घुस भी सकता है सो पुल सील मेथड इज ओनली यूज्ड इन द लैबोरेटरी स्केल बट इंडस्ट्रियल स्केल के लिए बेड सील मेथड टिप सील मेथड इज यूज्ड सो इंडस्ट्रियली टिप सील मेथड इज यूज्ड फॉर द सीलिंग ऑफ एम्पुल्स और लैबोरेटरी पुल सील मेथड इज यूज्ड नंबर ऑफ कंटेनर टू बी टेस्टेड विद रिस्पेक्ट टू बैच साइज टोटल नंबर ऑफ कंटेनर इन बैच अगर आपके बैच में 100 कंटेनर है मोर देन 100 नॉट मोर देन 100 कंटेनर है अगर आपका बैच है एक इंजेक्शन का उसमें 90 कंटेनर है मतलब नॉट मोर देन 100 so only 10% of that container that is a 4 containers they are tested for quality control test if your batch is a more than 100 container but less than 500 100 से लेके 500 तक तो you have to take a 10 container for testing more than 500 container आपके बैच में you have to take 2% of that container or 20 container whichever is less तो 2% लेना है या फिर 20 कंटेनर लेना है जो भी कमाएगा वो लेना है लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स अगर है 2% और 20 कंटेनर whichever is less तो हाउ मेनी कंटेनर्स यू हैव टू टेक फॉर टेस्टिंग इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं सो इफ योर बैच इज ऑफ 100 कंटेनर और लेस है ना 100 कंटेनर है या फिर उससे कम है तो 10% कंटेनर लेना है या फिर 4 कंटेनर लेना है अगर 100 से ज़्यादा है 500 से कम है so more than 100 but not more than 500 then you have to take 10 containers so if containers batch of containers is more than 500 you have to take 2% or 20 container which is a less which one is less large volume containers है 2% or 20 container whatever is less sample size for sterility testing again you can see not more than 100 containers 10% or 4 containers whichever is a greater more than 100 containers है but not more than 500 10 containers more than 500 containers 2% or 20 containers whichever is less or large order containers 2% or 10 containers whichever is less it's an antibiotic solid में फार्मेसी बल्क पैकेज है मोर देन 5 ग्राम उसका वेट है एक कंटेनर में 20 कंटेनर आपको टेस्ट करना है फार्मेसी बल्क पैकेज मोर देन 5 ग्राम लेस देन 5 ग्राम 20 कंटेनर मोर देन 5 ग्राम है तो 6 कंटेनर bulk and blends so bulk solid product ophthalmic and non injectable preparation जो थे not more than 200 containers अगर का बैच में 5% और 2 containers आपको whichever is a less whichever is a greater then more than 200 container है तो 10 container लेना है devices जो है sterile devices उसमें ना उसमें आपका needle वगैरह catgut वगैरह सब आता है so catgut and other surgical sutures for veterinary use 2% or 5 packages testing के लिए sterility testing के लिए और 20% up to maximum 20 packages not more than 100 articles 10% of 4 articles whichever is greater more than 100 है लेकिन not more than 500 articles है more than 500 articles है batch size में है ना ये batch size है
अगर एक बैच में आपका कैटगट या फिर सर्जिकल स्विचर्स या फिर जो भी है वेटरनरी यूज के लिए 100 है, वेटरनरी यूज के लिए तो 2% लेना है या फिर 5 पैकेजेस लेना है, नॉट मोर देन 20 पैकेजेस, नॉट मोर देन 100 आर्टिकल्स है आपके, बाकी इसके लिए नॉर्मल यूज के लिए तो 10% लेना है या फिर 4 आर्टिकल्स लेना है, विच एवर इज ग्रेटर। जो ज़्यादा आएगा 10% ज़्यादा है तो 10% ले लो, या फिर 4 कंटेनर ज़्यादा है तो वो ले लो। मोर देन 100 बट नॉट मोर देन, मी करतो तुला कॉल मी लेक्चरमध्ये, मी करतो तुला कॉल मी लेक्चरमध्ये. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट? ऑडिबल आहे का? सो बल्क सॉलिड अगर है, बल्क सॉलिड प्रोडक्ट अप टू 4 कंटेनर्स है बैच में, सो आपको चारों कंटेनर लेने हैं टेस्टिंग के लिए. ओके, मोर देन 50 कंटेनर्स है, सो 20% और 4 कंटेनर वॉट एवर इज अ, मोर देन 50 कंटेनर्स है, सॉरी मोर देन 50 कंटेनर्स है, so 2% or 10 container whatever is better. Yeah. More than 4 container but not more than 50 containers बैच में. अगर बैच में आपके 4 ही कंटेनर है, आपको 4 कंटेनर है, तो आपको पूरे कंटेनर को टेस्ट करना है एक्चुअलिटी के लिए. अगर बैच में अगर 4 कंटेनर है, उससे ज़्यादा है लेकिन 50 कंटेनर से कम है, 20% और 4 कंटेनर्स whatever is better. अगर कंटेनर 50 कंटेनर से ज़्यादा बैच है, 2% और 10 कंटेनर ऑफ ईच बैच whatever is better. स्टडलिटी टेस्ट. बाकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है ना, पहले तो होता है आपका स्टडलिटी टेस्ट. स्टडलिटी टेस्ट हुई है, बाद में आता है आपका, है ना, बाद में आपका आता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, सीओ या फिर आसे, तो परसेंटेज ऑफ ड्रग इन द कंट्रोल, वो एक रहेगा टेस्ट. ठीक है, बाकी कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रहेंगे? सो लीकर टेस्ट और लीकेज टेस्ट टू डिटेक्ट द इनकम्प्लीटली सील्ड. अगर एम्पल्स है वो कम्प्लीटली सील नहीं हुए तो उसमें कंटामिनेशन भी हो सकता है, प्रोडक्ट का लॉस भी हो सकता है. टिप सील एम्पुल आर most likely to be incompletely sealed than those which have been full sealed. full sealed में complete sealing होता है, बट full sealing में क्या होता है, उसमें नुकीला पार्ट बाहर रहता है, तो वो डेंजरस. टिप सील इज मोस्टली इनकम्प्लीटली सील्ड, तो चेक करना है आपको सीलिंग प्रॉपर हुआ है नहीं. हाउ यू कैन चेक? So you can check the sealing by immersing the ampoules in the dye solution. So it can be detected by producing a negative pressure within a completely sealed ampoule, usually in the vacuum chamber. Ampoules is entirely submerged or dipped into color solution. मिथिलीन ब्लू का 0.5% to 1% आपको सोल्यूशन बनाना है, उसमें पूरे एम्पूल्स रखना है और उसको वैक्यूम में रखना है. अगर एम्पूल इनकम्प्लीटली सील्ड है, पूरा सील नहीं है, तो वो डाई एम्पूल के अंदर जाएगा. अगर सील है तो नहीं जाएगा. बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर keep the ampoules not properly sealed, the dye will penetrate inside the ampoule making the solution colored. Alternatively, ampoules are submerged in dye solution that can be substituted for autoclaving. ये वाला जो है ना, वो तो हमने किया है. सो एम्पूल सील करना है, वो प्रॉपरली सील हुए कि नहीं, वो चेक करने के लिए क्या करना है, एक मिथिलीन ब्लू का डाई का सोल्यूशन बनाना है 1%, वो मर्ज करना है, उसमें एक कंटेनर में डालना है, वो सब है ना, बीकर बड़ा सा बीकर लेके मिथिलीन ब्लू का सोल्यूशन बना के उसमें वो सब एम्पूल्स डालना है और उसको एल्यूमिनियम फॉइल से रैप करके ऑटोक्लेव करना है. बाद में चेक करना है कितने एम्पूल के अंदर वो सोल्यूशन, कितने एम्पूल के अंदर डाई गया है, तो वो एम्पूल क्या है, नॉन कंप्लीट है, नॉन इनकम्प्लीट सीलिंग. Vials and bottles they are not subjected for this test because of the presence of rubber closure. जो वायल्स होते हैं, वायल्स जो होते हैं, बॉटल्स जो होते हैं, उसके लिए ये टेस्ट नहीं है, because they are closed with the rubber closure, right? On the content uniformity, it should be 80 to 101, 115% of level के. जैसे आपको लिखा है each ml of paracetamol, है ना, each 5 ml of paracetamol इंजेक्शन एपिकस्टोप पैरासिटामोल 200, उसका 80 to 115% है ना, 200 mg का 80% कितना होता है, जो भी XYZ. सो यूनिट कंटिन्यू यूनिफॉर्मिटी शुड बी 80 to 115%. Then clarity test. According to the USP, all containers should be usually
visually inspected with the viable particle must be discarded. अगर किसमें कोई viable particle है दिख रहा है क्लैरिटी टेस्ट में, क्लैरिटी टेस्ट कैसे करते हैं, पूरा जो कंटेनर है आपका वो आपको इसके सामने रखना है, किसके सामने, कंटेनर आपको सामने रखना है ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन जो होता है लैब में भी है आपके, तो वहाँ पे पहले ब्लैक है ना, पहले ब्लैक स्क्रीन में देखना है, स्क्रीन में आपको कलर कंटेमिनेट आएंगे, बाद में व्हाइट स्क्रीन के आगे देखना है। तो व्हाइट स्क्रीन के आगे अगर आपके इसमें ब्लैक पार्टिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में बहुत बड़े बड़े ग्लास के सलाइन बॉटल आती थी, इसमें रबर क्लोजर यूज करते हैं। सो व्हेन यू प्रिपेयर अ सलाइन सॉल्यूशन एंड यू क्लोज द रबर, बाद में आर्टिकुलेट करो, आर्टिकुलेट करने के बाद में रबर का क्या है, रबर से कुछ पार्टिकल्स ब्लैक कलर के वो कंटेनर में जाते हैं। So rubber used to leach some particles. So that particle can be detected by keeping the bottle against the black and white screen. So USP has established a limit that 50 particles of limit क्या है 50 particles of 10 micron and larger and larger 5 particles of 25 micron, not more than 50 particles of 10 micron or larger and not more than 5 particles of 25 micron or larger. Visual inspection is done against the black and white screen. Nowadays, the instrumental method is also there based upon the light scattering. And ASIC is active content. You can determine the content by using HPLC chromatography or gas chromatography. So this is the quality control test again for the parenterals. So this will end your chapter parenterals. अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलता है